Hello class 12. Today I am going to continue with this chapter number 8, evidences and theories of biological evolution, and today's topic is selection. Actually selection is the part of sources of variation, but 5 marks question will come in the examination on the selection. So today I am going to continue with this chapter number 8, evidences and theories of biological evolution, and now today's topic is a selection. It is a 5 marks question in the board examination. Okay, selection, this is the mechanism that is considered to occur at two interrelated levels, at the level of the organism and at the level of the L. ठीक है, ये दो लेवल पे सिलेक्शन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे सिलेक्शन करते हैं और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एल्स. ठीक है, नाउ selection is the process by which those organisms which appear physically, physiologically and behaviorally better adapted to the environment survive and reproduce. Those organisms not so well adapted either fail to reproduce or die. The former organism pass on their successful characteristic to next generation, whereas the latter do not. Therefore, selection can be seen to operate through the process of differential motility, and differential reproductive potential. Okay, differential reproductive potential. Okay, now selection is a mechanism that is considered to occur at two interrelated level, at the level of the organism and at the level of the allele. ठीक है, इसमें दो तरह के हम कर सकते हैं. सिलेक्शन इज अ प्रोसेस by which organism which appear physiologically or physically and behaviorally better adapted to the environment, और दूसरे किस टाइप के होंगे, that is those organisms which not so well adapted, they are either fail to reproduce or die. ठीक है, या तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, वो डाई कर रहे हैं. ओके, the former organism pass on their successful characteristic to the next generation, whereas the latter do not. Therefore, selection can be seen to operate through the process of differential motility and differential reproductive potential. Selection has an adaptive significance in perpetuating those organisms most like to ensure survival of the species and depend upon the existence of the phenotypic variation within the population. Okay, now basically there are three types of selection. Okay, three types of selection possesses occurring in natural and artificial population. अगर कोई natural population है वहाँ पे भी apply होते हैं, और कोई artificial population they applied on there also. Now first one is stabilizing. First one, three types. The first one is stabilizing. Stabilizing selection, and the second one is directional selection. And the third one is disruptive. Okay, third one is disruptive selection. Okay, now in the first one, stabilizing operates when phenotypic features coincide with optimal environment condition and competition is not severe. ठीक है, स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, सपोज एक हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, देयर इज नो कंपटीशन एंड ग्रोथ क्या है, बढ़ रहा है इन दिस मैनर. नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है. दिस इज स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ सिलेक्शन. Means there is no competition or competition is not severe. It occurs in all population and tend to eliminate the extreme from the population, and stabilizing selection pressure do not promote evolutionary changes.
ठीक है. स्टेबलाइजिंग selection pressure do not promote the evolutionary change and but tend to maintain the phenotypic stability within the population from generation to generation. Now second one, directional selection operates in response to gradual changes in the environmental condition. It operates on the range of the phenotypic existence within the population and exerts selection pressure which moves to the mean phenotype towards the phenotypic extreme. What is phenotype? That is the external feature. ठीक है, जब environment में changes आते हैं तो organism में भी changes आएंगे, वो adapt करेगा अपने आप को according to the environment. Now third one, disruptive. It is probably the rarest form of selection but can be very important in bringing about evolutionary change. Fluctuating condition within an environment, say associated with season and climate, may favor the presence of more than one phenotype within a population. Selection pressure acting from within the population as a result of increased competition may push the phenotypes away from the population, means towards the extremes of the population, but this can split the population into two subpopulations. If a gene flow between the subpopulation is prevented, each population may give rise to a new species. In this form, it is a very rare list. Okay, now in disruptive का जो graph है is like that, disruptive. Okay, मिला, फिर ये बन गया. That is on same. That is disruptive. Okay, in this stabilizing, you can see in this pyramid, if this one is this and एक peak होगा and then is down. This is stabilizing. And in directional selection is like that. This one और एक यहाँ पे एक थोड़ा सा slopey होगा and then is down. This is directional and this is stabilizing. More resources. यहाँ पे क्या होगा, climate थोड़ा change हुआ, थोड़ा सा changes आए. यहाँ पे is पूरा एक यहाँ पे gap होगा. That is two peaks form in this type of disruptive selection. Okay. In this type of stabilizing phenotype types favored by natural selection, and here in this B1, that is stabilizing peak gets higher and narrower, and this one is directional, peak shifts to one direction. Here peak shift to one direction, and here the two peaks form. In this disruptive, two peaks forms. Now next one, some examples of natural selection. First good example, that is industrial mannerism. Examples of natural selection. Examples of natural selection. First good example, that is industrial melanism. This is a story actually. Industrial melanism is a type of a story which one of the best known examples is peppered moth or distant Butyleria. It is also called the peppered moth or distant Butyleria. इसका नाम क्या था scientific? That is distant Butyleria. ठीक है, distant Butyleria is the name of this peppered moth. इसकी story actually ये दो तरह के होते थे. First one, that is before industrial revolution, that is white in color and adapted into the particular environment in before industrial revolution, and second one, that is black species. Okay, दो तरीके होते थे, ब्लैक एंड वाइट. लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या होता था, वहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं था, वहाँ की वॉल्स क्या होती थी, वाइट होती थी. वॉल्स क्या है, वाइट होती थी. लेकिन जैसे ही इसमें ब्लैक कलर का डिस्टेंट ब्यूटिलेरिया बैठता था, जाके बर्ड उसको देख के पिक करके खा लेती थी. तो ब्लैक के नंबर्स तब कम होते थे, और लेकिन वाइट वाला जब इसमें बैठता था, नॉट ईजिली सीन बाय द बर्ड, द वाइट वन. ठीक है, तो इसके नंबर इंक्रीज करते जा रहे थे क्योंकि वो इजीली अडैप्ट था ऑन द वॉल ऑफ द लाइकन के वॉल पे, वहाँ पे घर के ऊपर जब
पोल्यूशन नहीं होता तो लाइकेन बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वाइट कलर के लाइकेन के ऊपर वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया जब बैठता था वाइट कलर का तो ईजिली कंसील कर लेता, छुपा लेता था अपने आप को, लेकिन ब्लैक वाला वाइट के ऊपर ईजिली दिखता था, बर्ड उसको पिक कर लेती थी, खा लेती। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन सिस्टम में आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज लगी, पोल्यूशन बढ़ा, कंडीशन चेंज, ब्लैक वॉल टर्न इनटू ब्लैक, वाइट वॉल्स टर्न इनटू ब्लैक वॉल, ठीक है, जो दीवारें थी वो क्या होने लगी, ब्लैक होने लगी। आफ्टर दैट दिस ब्लैक वन इज ईजिली कंसील, अपने आप को ब्लैक वाला क्या कर रहा है, ईजिली कंसील कर रहा है, लेकिन वाइट वाला ईजिली दिख रहा है by the birds and pick up by the birds, okay, pick up by the birds, and this one, in this one, this is pick up by the birds first. This is the industrial mannerism, and means यहाँ पे ये इसका जो बेसिक कंक्लूजन है कि जो वाइट वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया था वो अडाप्ट करा हुआ था अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट और उसके नंबर इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन ब्लैक वाला अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहा था, बर्ड उसको देख रही थी, बर्ड एक्ट एज अ नेचर है और वो उसको पिक कर रही थी, तो वाइट के नंबर इंक्रीज कर रहे थे, ब्लैक के नंबर डाउन जा रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन हियर नंबर एज अ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। नाउ हियर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ओके, आफ्टर इंडस्ट्रियल revolution, now white wall turn into black and this black one conceal अपने आप को कंसील कर रहा ऑन द ब्लैक वॉल एंड वाइट वन इज इजीली पिकअप बाय द बर्ड्स एंड धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, वाइट के नंबर कम हो गए और ब्लैक के नंबर ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाला अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। ओके।